Sandwiched between the desert and the sea, Kutch is normally seen as an arid, lifeless place, but it is through history, in fact, it has been at the crossroads of communities who have moved in and out, pastoralists, nomads, and all of them have had a great influence in making the culture of Kutch vibrant and vivid. It's today home to some of the most fascinating art forms, crafts, embroideries. And today we're talking about how a movement started somewhere in the 90s, which really grew into a massive groundswell, as I said, where we saw a massive revival of a lot of these art forms. We've got a great panel with us today. We've got Puneet Soni, who is the CEO of Kasab, one of the organizations that has worked with the Kutch women since the 1980s. We have Mukesh, who joins us, Mukesh Banani, who joins us from Kala Raksha, again, a fabulous NGO that has worked in reviving some of the traditional art forms of Kutch. We also have Nilesh Priyadarshini, who runs the Karigar Clinic, which is a very interesting initiative to create brands around individual artisans. And we'll talk a little bit more on that. And we have Archana Nair, who of course is the head of product strategy and is a chief curator of People Tree. But before we delve into what has been done to revive these arts, let's take a step back and really put in perspective why Kutch is such an important place as far as arts and crafts are concerned. Now, India is, of course, full of the most amazing traditions, but in Kutch, you will find a concentration of them. Archana, let me start off with you. Put this in perspective for us, because People Tree is all about the stories behind our arts as much as it is about the celebration of Indian arts. What makes Kutch so special? Kutch is literally like a melting pot of crafts. It's got every possible craft you can think of. And while people bracket it as a broad category, within every category, there are so many variations. For example, they have almost about, if I'm not wrong, almost 14 to 15 different types of embroidery done by different communities. And each is distinct from the other. None of them can be replicated by the other. There's something that's gone down from one generation to the other. And they look distinct, and the techniques are distinct as well. Then we have various weaves. We have the bujodi, we have the tangalya, we have the patolas. I mean, the list is endless, and each is stunning in their own right. We also have bell metal work that happens. We also have lot of exciting stuff happening with leather craft. So it's such an expanse of crafts. And we are very lucky to be working with all the people on the panel today here, because they are what I would call stalwarts when it comes to the revival, the preservation of these crafts. For example, I can start with Kala Raksha. Kala Raksha actually has a museum where students can actually go and see some of the most exquisite pieces which have been collected over the years. These are one of a kind and literally probably not even possible to make anymore. And based on this, they have started the revival process. Kasab does a very similar job. And what's the beauty of the crafts of Kutch is that while all of them are in the same space, each has their own distinct look and their own distinct feel to it. For example, Kala Raksha works a lot on natural dyes, cowrie shells, beads, all locally found. Kasab has taken it to another level with innovations in design and fabrics. And Karigar Clinic is working on a very, very innovative concept where they have actually explored new mediums apart from using traditional techniques. So it's really, I don't think there's any state that's as varied and rich when it comes to crafts as Kutch. Absolutely. And let's go back a little to understand the journey, because what is also interesting is that very often, especially in a time like this, right, when we're talking about a pandemic year of stress across the artisanal community, we often are very pessimistic out of the outcome. But what is interesting about the Kutch revival movement is also that it stemmed out of adversity.
So the actual pivots were the cyclone in 97, I think, which really devastated the region. And then the earthquake, the Bhuj earthquake of 2001, where actually there was a huge amount of damage done. And that's where a lot of the organizations, kind of doubled up efforts to work with the artisans and revive it. So it's a process. Puneet, let me start off with you. One of the big focus areas for Kasab has really been emancipation, not necessarily just art revival, because you started off as a Kutch Mahila Vikas Sanghatan, which was essentially trying to make sure that women got equality, got economic, leeway, etc. But I remember you telling me that one of the biggest challenges for you in the beginning was to turn what was traditionally seen as a ritualistic art form, which was done within families, into a marketable commercial venture, right? You've come a long way from that. I want you to tell us what the process has been, what the journey has been. Yeah, it was very challenging. If we go back in 90s and all, the situation was so critical, and the women who were the real embroiderers, they were not getting the right amount of payment, or uh, the income generation out of was not very well. So middlemen were the only who were getting out of it. So our intention was to build a collective who works together and earn together. And at the same time, in the phase of all these, the revival was one of the major agenda, that in the race of marketization, volume production, and all these were vanished, and the real authentic embroideries of Kutch was not practiced. So our journey has started where it was so critical situation where the embroidery was dying, the income was not that good, and the market was flooded with the any type of embroidery, which is not sometimes Kutch embroideries also. Our intention was to build a collective of women artisans to earn together and at the same time revive the embroidery. So from there we have started in 90s and 97 ourselves as a Kasab brand. It's a women-owned brand, and yeah, that is the beginning we have started with. Yeah. Right. In Kalaraksha, Mukesh, it's been, as Archana said, about reviving art forms, right? What was the state they were in? Because very often across the country, we've seen art forms die out because of the generational switch. Kalaraksha has not only revived it, but what is fascinating is that it has got a Vidyalaya, which is really a institute, which trains artisans are traditionally gifted to try and innovate within their product. So it's not just revival, it's really hand-holding them to make sure that they get the best out of their own traditional arts, isn't it? नमस्ते सब लोग को। जैसे मतलब कला रक्षा का मेन फोकस वही रहा है कि न सिर्फ हम ये जो आर्टिजन वर्क कर रहे हैं इट्स अ लेबर वर्क करें। आर्टिजन एक वो आर्ट कर रहे हैं, उनकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उनकी डिजाइन होनी चाहिए। जब जो फेस है प्रोडक्शन का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना उसका जरूरी है, तभी हम उसको एक आर्ट बोल पाएंगे। जब तक आर्टिजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो एक जैसे लेबर करता कहते हैं उतना करता है काम, पर आर्टिजन क्या है कि आर्टिजन अगर कुछ अपने हाथ से, अपने दिमाग से, अपने दिल से कुछ भी करते हैं उसको आर्ट हम बुलाते हैं। तो हमारा कला रक्षा का यही फोकस रहा है कि हम आर्टिजन की क्रिएटिविटी को बाहर ले आए और उनकी मार्केट के हिसाब से उनकी स्किल को किस तरह से अपग्रेड करना, ये हम कला रक्षा विद्यालय से कर रहे हैं। कि मतलब ये एक हमने ऐसा डिजाइन स्कूल बनाया है जो इंडिया का ऐसा पहला डिजाइन स्कूल है, कला रक्षा विद्यालय, जो यहाँ के आसपास जो ट्रेडिशनल आर्टिजन है, जो मतलब एजुकेटेड भी नहीं है, जिन्हें नॉलेज भी नहीं है कि उनके प्रोडक्ट कहाँ बिकते हैं, कौन खरीदता है, कैसे प्राइसिंग होते हैं, क्या चीजें से वो बनते हैं, तो वो चीज सारा वो डिजाइन एजुकेशन के थ्रू अपने में सीखते हैं वो चीजें, और फिर अपने प्रोडक्शन में वो उसको उसमें वो चीजें वो ऐड करते हैं। जैसे कि मतलब उनका ट्रेडिशन उन्हें पता है, कि उनकी कला उन्हें पता है, पर उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है
अभी के मार्केट में, वो चीज मतलब ट्रेडिशनल टू कंटेम्प्रेरी किस तरह से किया जाए, वो चीज कला रक्षा विद्यालय के थ्रू एक आर्टिजन गेन कर रहा है। और इसी ये जो हमारा कला रक्षा विद्यालय का ये जो एजुकेशन प्रोग्राम है, वो काफी ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं उनको एक ब्रांड, उनकी एक आइडेंटिटी दिलवा रहा है। बिल्कुल। और दिस इज रियली अ प्रोसेस जो नॉट ओनली रिवाइविंग द आर्ट फॉर्म्स बट गिविंग देम the confidence to stand up on their own feet and demand a certain pricing, a certain kind of quality that they are able to bring to the fore. नीलेश जी, आपसे अगर मैं पूछूं तो आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है, एक ब्रांड बनवाया है आपने एक आर्टिजन के अराउंड जो पाबी बैन के नाम से जाना जाता है। इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ हाउ एन आर्टिजन has created a brand for herself, Pabi Ben, and she does some fabulous works which are innovative and yet traditional. तो आप ये बताइए, कारीगर क्लिनिक का जो है क्या मैंडेट था और आपने कैसे ये स्टार्ट किया? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा ये सद्भाग्य रहा कि क्राफ्ट सेक्टर के लीडिंग एनजीओ और लीडिंग कॉरपोरेट के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे आर्टिसन के साथ और अपने अपने ब्रांड को मार्केट में वेल एस्टेब्लिश कर चुके थे, पर एक जगह लेकिंग आ रहा था, वो ये था कि आर्टिसन आइडेंटिटी। अगर हम पूरे क्राफ्ट सेक्टर की बात, कच्छ को भूल जाए, पूरे क्राफ्ट सेक्टर की बात करें तो आज भी ये देखा जाता है कि कारीगर जो काम कर रहा है उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। तो उस सिलसिले में बहुत सारे आर्टिसन से हमारी बात हुई। बहुत सारे आर्टिसन को हमने ये क्वेश्चन किया कि आपके लिए एक अच्छी जिंदगी क्या है। तो आर्टिसन की तरफ से ही जवाब आया कि हमें पैसे चाहिए, बट सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, पैसे के अलावा हमें आइडेंटिटी चाहिए, वैल्यू चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, उस समय डिग्निटी मिलेगी। तो वो लेकिंग पार्ट था, क्योंकि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज रहता है कि वो पूरे क्लस्टर को लेके काम करता है, तो वो कोई इंडिविजुअल आर्टिसन के को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करेगा। तो हमने वो लेकिंग पार्ट देखा कि हम आर्टिसन चाहते हैं कि सिर्फ पैसा नहीं, उनको आइडेंटिटी, वैल्यू, रिकॉग्निशन चाहिए, तो वो कैसे मिल सकती है। तो हमने सोचा कि अगर आर्टिसन के नाम की खुद की ब्रांड बनाई जाए तो ये सारे जो उनके एक्सपेक्टेशन हैं, पैसे का एक्सपेक्टेशन, आइडेंटिटी का एक्सपेक्टेशन, वैल्यू, रिकॉग्निशन, वो सारा कुछ मिल सकता है। तो अगर हम आर्टिसन को माइक्रो एंटरप्रेन्योर डेवलप करते हैं तो ये सारी चीज पॉसिबल हो सकती है। पर सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि बहुत सारे आर्टिसन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनमें जो कॉमन चैलेंजेस थी वो ये थी कि उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, बिजनेस स्किल नहीं था, मैनेजमेंट स्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक स्किल था, वो था क्राफ्ट का। तो ऐसे आर्टिसन को हम आइडेंटिफाई किए जिनके पास बहुत अच्छी कला है और जिनके पास पैशन है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और कारीगर क्लिनिक के माध्यम से हम एक नॉर्मल इंसान को बिजनेस करने के लिए जो इकोसिस्टम की जरूरत होती है, वो इकोसिस्टम अगर हम डेवलप करके देते हैं तो कारीगर खुद ये इकोसिस्टम को विद इन 2-3 इयर्स लर्न करता है और 3 साल में इतना एबल हो जाता है कि वो अपना छोटा बिजनेस खुद ही चला पाए। तो इसी मकसद से हमने माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कारीगर क्लिनिक की शुरुआत करी। तो आप अगर पाबी बैन का एग्जाम्पल दें नीलेश जी, उन्होंने I mean, how has she evolved as an entrepreneur? She started off as somebody, again, who had never worked before. And it was a factor of the earthquake and the problems that the family faced that, made her get into or start looking at commercializing her traditional craft. तो अभी अगर आप वो एक केस स्टडी की तरह लें तो कितने उनका सेल्स क्या है, क्या कम्युनिटी बनाया हुआ है उनके अराउंड? तो पाबी बहन का जो कैरियर का शुरुआत था वो कला रक्षा ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ था। बहुत सालों तक कला रक्षा ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने काम किया। फिर उनकी अंदर की ख्वाहिश ये थी कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, मुझे माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनना है।
तो जैसे मैं अहमदाबाद में मूव हुआ तो मेरा भी एक विजन था कि मैं कोई सोशल प्रोजेक्ट करूं। तो पाबी बहन से हमारी मुलाकात हुई, उसमें पाबी बहन ने अपना जो दिल की इच्छा थी वो बताई कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, बट मुझे दिक्कत आ रही है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं चीजें तो अच्छी बना लूंगी पर इसको बेचूंगी कहाँ पे। तो ये सारी ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम थे। तो हमने साथ में बैठे, सबसे पहले तो एक कंफर्ट लेवल पर दो लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने यही डिसाइड किया कि अगर मुझे पाबी बहन पर 100% भरोसा होगा या पाबी बहन को मुझे 100% भरोसा होगा, तब जाके ये चीजें आगे बढ़ पाएगी। और ये कॉमनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट अगेन ये था कि हम एडवोकेसी कर रहे थे कि आर्टिसन को आइडेंटिटी मिले। तो वो आइडेंटिटी कैसे मिलेगी, हमने बहुत सारे नाम सोचे। जैसे बिजनेस की शुरुआत करनी थी तो बहुत सारे नाम सोचे, बहुत सारे फैंसी नाम भी सुझाव आए, पर हमने एक ही पॉइंट पर ये डिसाइड किया कि अगर ब्रांड बनेगी तो वो एक आर्टिसन के नाम की बनेगी। और उसके पीछे एक कॉमन सोच ये थी कि अगर रितु कुमार के नाम की अपनी ब्रांड बन सकती है तो पाबी बहन के नाम की ब्रांड क्यों नहीं बन सकती। ये डिफिकल्ट था बट इम्पॉसिबल नहीं था। तो हमने ये डिसाइड किया कि पाबी बहन के नाम की ब्रांड बनेगी। बट उसके बाद हमने उसके साथ .com ऐड कर लिया कि नई जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको ग्लोबल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो pabiben.com हमने डिसाइड किया कि ये ब्रांड नेम होगा। और शुरुआत में उनकी कम्युनिटी की 5 महिलाओं के साथ ये ब्रांड को एस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे उसमें हम आर्टिसन को जोड़ते गए और उनके डिजाइन भी ऐड करते गए। आज पाबी बहन, मतलब आप देखिए पिछले 4 साल की ये जर्नी है। पाबी बहन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब उनकी इनकम थी 1500 रुपीज पर मंथ। आज पाबी बहन 250 से ज्यादा डिजाइन बनाती हैं, अपने गांव और आजू बाजू की 200 महिलाओं के साथ काम करती हैं और उनका टर्नओवर 30 लाख को क्रॉस कर गया है। फैंटास्टिक, तो ये फैंटास्टिक। जी, तो ये एक अच्छा मॉडल जो डेवलप किया है। तो आई थिंक नाउ पाबी बहन इज प्लेइंग एज अ रोल मॉडल फॉर अदर आर्टिसन। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके और भी महिलाओं में ये इच्छा जगी है कि हम भी पाबी बहन जैसा बन सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज फ्यूचर में आ सकता है कि महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप वाले फील्ड में आगे आ सकती हैं। Right, and Archana, Pabi Ven bags are very popular on people tree. Even I own one, so really, it's a fantastic story of developing a brand around an individual. That is the ultimate goal, right? I mean, across the world, art is known by the artisans, and sadly, in India, we've not given that identity. Now, tell me, one of the big things Kasab, Kala Raksha, and Karigar Clinic have done is create a valuable proposition around crafts, where you are saying that the hard work of the craftsman is so important that it needs to be valued. You cannot, undermine it by talking about it as being a cheap product. So I think that value over volume, that's something I want to ask both Puneet and Mukesh. But from your perspective, you work with so many artisans. For me, I feel that is the problem, right? It's how we value this art. Absolutely. I always tell people that when you walk into a LV showroom or a Chanel showroom, and you probably see products that are made in hundreds or even thousands, do you ever question why it's priced that way? But we are so quick to question something that's handmade, that takes months to make, that's one of a kind, and bargain with artisans who make these. It's really a mind switch that needs to happen, and it's something that you need to look at as a premium product. These are products that if they lose their premiumness, they cease to be beautiful anymore. And I think the crux of what all of them here have done is maintain the quality, maintain the originality of the work, and stress on the traditional techniques while contemporizing it. And that is very important as well. And I think in any craft form, diluting a craft form, it can never be the way forward, because it just leads to the end of traditional techniques. And I think kudos to all the organizations working there and the artisans for keeping this alive, because this is really all that we have. If this goes,
There's no difference between our country and any other country that can mass produce stuff. Right. Puneet, let's look at the Kasab example itself. This is the point that you had made when, the brand Kasab was, to really make sure that artisans got the value for their money. And traditionally in India, because of the legacy, we've always seen crafts as a mass product, a product that many people could buy, volume product, not a value product. So tell us how you consciously chose to walk on the value path and what has it meant for the remuneration that the artisans themselves get? See, there were two things in this. See, most of the embroideries were disappearing since the community themselves were not able to continue doing intensive embroidery due to the economic hardships. They were not getting the right return on it. So it's a basic human tendency to earn more. You'll try to get some shortcuts. So the Kutchi traditional embroideries, every community has a very distinct identity, as we have talked earlier also. So every community has a different steps to complete the embroideries. In that, if you try to complete that work, it takes little longer time than the normal if you take the shortcuts. So here to get little more money, they tried to take the shortcuts and the authentic embroideries of Kutch started dying out. So here we took the step in and said like we'll try to find out the market which is niche market which values and appreciate the hardship and the authenticity in the embroidery. So we have chosen value over the volume. We said okay, we do the authentic purest of the embroidery in the contemporary form of the product, but we'll not try to put it down in terms of the market is not able to buy it. That is why we are not going to suppress it or like make it a lower value product. So we'll find the market, we'll try to make the best product, and from that best product, the authentic, the right income will also reach back to the artisan, and it will be considered as an artwork and not merely a little needle thread work or a mirror work. So bringing out the identity of each and every ethnic community through their authentic work and finding the niche market was the best composition, and we thought this will be the best work to do, where we are not running around producing the lakhs of pieces, rather produce the best pieces and sell in a niche market, which gives the better return to the artisan ultimately. Right. I have two questions here. One is an obvious question, right? The last year has been a very challenging year, because we've seen so much of distress across artisanal clusters. Has this strategy of going for value over volume helped you tide over this period wherein you're saying that it's not been that bad for your artisans? It has been bad all across. When see, Kutch has been gone through so many various type of calamities or natural disasters and everything. But COVID is such which has covered the whole world. So embroidery or any other crafts are not essential commodity. First and most important thing, whether it's a worst work, cheapest of the work, or the highest level of the work. So here the occasions, the society are not celebrating many of the festivals, marriages are not happening. So embroidery has been like a backstep by the market because it's not the essential commodity. So yes, it has affected. But as a collective, we are trying to be more, strengthen our values more and trying to find out still the better market, which can give the better returns to the artisan without compromising on the authenticity of the embroideries and the perfection of the embroidery in that. So yes, it is challenging, but yeah. But you're saying it's not as bad as it would have been if you were just talking about a mass market. The fact is that they're better equipped because they've also been earning much more. So then it's not the hand to mouth existence that we find in many, many cases, right? Mukesh, आपने जो कला रक्षा में किया है, another very interesting factor is आपने एक research center की तरह use किया है ये revival project को. You have a lot of tie-ups with international universities, colleges. वहाँ से designers आते हैं, अपने artisans के साथ काम करते हैं. तो एक collaboration हो गया है. Has that helped you? जैसे हमने जब शुरुआत की थी 93 से लेकर तब से हम जो म्यूजियम पीसीस होते हैं, कुछ आर्टिजन्स के ओल्ड पीसीस होते हैं, वो कलेक्ट करते आ रहे थे.
कि मतलब ये कलेक्शन इसीलिए प्रिजर्वेशन, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें पता चले कि किस तरह के मोटिव्स रहते हैं, क्या डिजाइन रहते हैं, क्या कलर्स रहते हैं। तो इसे धीरे धीरे हमने कलेक्ट किए अलग अलग टेक्सटाइल क्राफ्ट से, जो भी कच्छ के और कच्छ के आसपास जो भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, इनको हमने एक एक करके कलेक्ट किया। फिर 97 में हमने एक कला रक्षा म्यूजियम बनाया, जहां पर हमने इस सारे पीसीस को शोकेस भी किया, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिससे जो लोग आते हैं उन्हें भी पता चले कि क्या कम्युनिटी करती है, उनका रोल क्या, क्राफ्ट का रोल क्या होता है उनकी लाइफ में। वो चीजें सारी हमने शोकेस की हुई है म्यूजियम के जरिए। और इसके अलावा इन सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए जरूरी है कि मतलब आगे 50 साल 100 साल बाद भी अगर कोई वो पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि ये क्राफ्ट कच्छ में होते हैं, इसका बैकग्राउंड यह है, ये है, इसकी हिस्ट्री ये है। तो हमने पूरा एक एल्बम हाउस क्रिएट किया हुआ है जो ऐसा रिसर्च सेंटर, और वहां पर हमने अलग अलग टेक्सटाइल क्राफ्ट को रखा हुआ है, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया हुआ है। और 2002 में हमने सारा जो पीसी है उसको डिजिटलाइजेशन भी किया हुआ है, कि मतलब ना सिर्फ आर्टिजन तो उसको उसके साथ कनेक्ट रहता है, पर जो बाहर जो टेक्सटाइल का स्टडी कर रहा है, किसी क्राफ्ट पे रिसर्च कर रहा है, उन्हें भी पता चले कि मतलब क्या 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 कच्छ है, कच्छ में क्या क्राफ्ट है, कैसी एम्ब्रॉयडरी है। तो इसीलिए हमने उस पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है पीसी से उसको डिजिटलाइजेशन करके उनको वर्चुअली एग्जिबिट किया हुआ है, जो 2002 में ऐसे इस काइंड का एक ही ऐसा प्रोग्राम था जिसको हमने जिसमें हमने इसको सारा बिठाया और वर्चुअली पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको एग्जिबिट किया हुआ है। तो वो आर्टिजन की फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी, मतलब जब भी वो कलेक्शन बनाते हैं या कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो सबसे पहले रिसर्च सेंटर आते हैं। रिसर्च सेंटर से वो कुछ ना कुछ मतलब इंस्पिरेशन लेते हैं, कि मतलब किसी की मोटिव या किसी का कलर कॉम्बिनेशन, किसी की डिजाइन। जब पहले जो होता था वो ज्यादातर नेचर से इंस्पायर्ड होकर लोग क्रिएटिविटी करते थे, आर्ट बनाते थे, और हेरिटेज से लेकर। तो यही चीज हमने यहाँ पर रिसर्च सेंटर में रखा हुआ है, कि लोग जो कला करे और जो क्रिएटिविटी करे वो थोड़ा उनको उनकी इंस्पिरेशन के लिए ये चीजें सारी जरूरी है, इसलिए हमने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वहां पर किया हुआ है। Yeah, it's very important क्योंकि this also becomes an archive, right? Because otherwise many of these traditions are losing out. जैसे रोगन का आर्ट फॉर्म जो है हमने वहाँ शूट किया था, एक ही फैमिली कर रहा है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि we actually train more people, create an archive where people can go and understand. हमारे व्यूअर्स के थोड़े क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो नीलेश जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। केतन पाठक का ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है कि all organizations work for the welfare of artisans. This should be continued and taken care of by the central and state government too. The rest is taken care of with all involved. ये कच्छ का जो एग्जाम्पल है, इसमें मुझे ये चीज अच्छा लगा है कि it's not about a government support, it's not about government handouts, it's really about innovation and the enterprise of individuals, it's NGOs of the community. Traditionally हमने देखा है सब जगह इंडिया में the government plays a very important role in hand holding. निलेश जी, उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि अगर कुछ एक लेसन है कच्छ का, वो ये है कि खुद जो है इनोवेशन और एंटरप्राइज से काफी कुछ कर सकते हैं लोग। आई थिंक मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी को, गवर्नमेंट स्कीम्स को अगर गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसका क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मॉडल है, आई विल गिव अ गुड एग्जांपल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और जिनको भी बिजनेस करना है उनको हम पैसा देंगे, जो भी इंडिविजुअल पर्सन को बिजनेस करना है उनको पैसा दिया जाएगा। तो आई थिंक उसका एक नेगेटिव रिजल्ट ये आया कि जिनको जरूरत था, जिनको जरूरत नहीं था, सब लोगों ने डिमांड करी
और बैंक के साथ सेट कर दिया, तो जिनको जरूरत नहीं था वो लोग ने भी पैसा लिया, पैसा खर्च करा, मजे किए, और फिर से वही कंडीशन रही, उनकी कंडीशन में कुछ चेंज नहीं आई। तो आई थिंक हमें पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट उनके इफोर्ट्स होने चाहिए, और आई थिंक उसमें जो आगे बढ़ना चाहता है उसका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो हम कारीगर क्लिनिक में भी यही करते हैं कि हम जो आर्टिसन को डेवलप करेंगे उनमें हमारा क्राइटेरिया ये भी है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स का हम बेनिफिट नहीं लेंगे। पाबी बहन का जो एग्जांपल है, पाबी बहन के पूरे मॉडल को डेवलप करने के लिए एक भी पैसा गवर्नमेंट स्कीम से नहीं लिया गया है, और भी जो आर्टिसन एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं उसमें भी हम लोग यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम का एक भी पैसा नहीं लेंगे। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल कैसे डेवलप किया जा सकता है वो हम लोगों को एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो आई थिंक ये पॉसिबल हो सकता है अगर हमारा इंटेंशन सही हो, हमारे इफोर्ट सही हो और सही दिशा में हम काम करें, तो विदाउट गवर्नमेंट हेल्प एक सस्टेनेबल मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं और ये सबके लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। Archana, we've got another question coming from Kumud Singh, who says, besides catering to niche market products, the arts of India need also to be diversified to have a wider reach to popularize craft and its sustenance. Now, this is an important point, but I would argue that there is such great variety that there is already a lot of kind of diversification. So as a curator at People Tree, for instance, what is your approach on this question of contemporizing and diversification of the kind of products that you have? See, while diversification is important, that's already happening, it cannot be, but of course, at the cost of losing out on traditional craft techniques. So it cannot be the most important thing. And at People Tree, what we're trying to actually get people to do is love the craft form in its truest form. Of course, it has to be usable, it has to be contemporary for the current markets, but you can't lose the essence of the craft. Because once you start doing too much of diversifications, people don't understand what the traditional techniques are. We can get to diversifications and creativity once we already have an established market for traditional crafts. I think people don't even know the variety of crafts that we have. For example, like I said, in Kutch, there's Ahid Bharat, there's Soof, there's Jat, there's Pako, there's like just the names of the embroideries, even I can't remember, leave alone studying each one and understanding the nuances of each. For example, we were having a chat, Soof embroidery, something that can, and another thing is this can only be done by women. Soof embroidery is something which can be done by women only up to a certain age because it's so fine that once their eyesight starts giving up, they can't do it. So, I mean, these are the things that people need to understand. And can you imagine a piece that has been made by somebody that cannot be made after that person is a certain age? These are what make these pieces so special. No two pieces, even though if it's made by the same person, can ever be the same, can ever be replicated identically. So, we have to look at diversification after we've started loving the crafts in their truest form. So the first step is really protecting the craft, reviving it in its true form, and then innovating. Puneet, there is a contemporary aspect to a lot of the Bhuj stuff, which I really find, and I think a lot of people appreciate, because your designs are very modern. It's a traditional art form. So you are also innovating, all of you, Kala Raksha and you, in terms of products. Has this focus on an international market also infused that within your DNA, where you're always thinking about innovation? Because in the moment you look at a global market, it's also very competitive, isn't it? Yes. Yeah, Jasat's main ideology always been there, that not losing out on the heritage and the authenticity of the craft, but how best still we can customize something which is suitable to the other person also who is going to use that in their daily life. So that customization, that value for money, that we always try to keep in the product, that wherever it is going, it is matching with what they think of or where they can also incorporate in their daily life. So that we always try to
match where it is going, colors of that, the product silhouette, the usability, the functionality of that, but not losing out on the embroidery. So whatsoever the product will be of a kasab, but the embroideries will always remain authentic. If at all the product is howsoever newest of the market or the very contemporary also, but the embroidery in that will never be the some ideal picture of someone else, that okay, there is some snake, you just do this, or something eagle, you just do the embroidery. So we always say they are not the laborers. The art will be authentic, the product will be, you say, whatever the demand will be. So Kasab become a model which is more B2B or more market friendly, where the product, you come up with the idea, we make the product, but balancing both, where artisan will put their inputs and designer or market will put their need. Sure. So how best we can balance this, that was the always an attempt by the Kasab, and Right. which we have tried to take it to the different levels also now. So one of the best example where we have approached to the Vancouver Museum, where we said like, okay, these are the art panels. One of the Kasab's product is the art panels, like the high value paintings, like wall panels. So we have approached them and we have said like, okay, how like look at this art, and the museum said yes, it is very beautiful, very authentic, but newly made. So we said, yes, it is newly made, but the knowledge in that is so generations, in hundreds of years of old generation knowledge in this. And you will not believe that was one of the best exhibition of the museum also, which ran for 16 months on a public demand. And it's a proud moment for women members of the Kasab or of Kutch, that such an artwork is represented in a contemporary way in a different place. ग्रेट मुकेश, ये सवाल आया है, मैं आपके साथ लूंगी ये, बिकॉज एक स्पेसिफिक सवाल है आर्काइविंग का. वीना मांडरेकर ने पूछा है कि इज देयर एन एफर्ट बीइंग मेड टू डिजिटली मेंटेन एन इन्वेंटरी एंड टेक्निक्स ऑफ आर्ट, कॉलेज कोर्सेज, वॉइसेस ऑफ आर्टिजन्स, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं क्या आप जो डिजिटली सेव करें ये ट्रेडिशंस? हाँ, मतलब जैसे कि यहाँ पर हम कुछ वर्कशॉप करते हैं, और दूसरा के डिजिटलाइजेशन के लिए जो भी पीसीस आता है और उनकी पूरी हिस्ट्री पूरा डॉक्यूमेंट करते हैं उसको, फिर ऑनलाइन भी हम उसको पूरा रखते हैं कि जब कोई भी पीस हो तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन उनके साथ आए. और दूसरा के यहाँ पर काफी मतलब अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं या फॉरेन से, इंडिया से, तो उन्हें पूरा वर्चुअली एग्जीबिशन भी दिखाया जाता है. इसके साथ साथ किस तरह से हम उन पीसीस को हम मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं और किस तरह से उसका ख्याल रख रहे हैं, वो चीज भी मतलब क्यूरेट किस तरह से कर रहे हैं, वो चीज भी उन्हें सिखाई जाती है कि मतलब क्या क्या आप, क्योंकि ओल्ड पीसी से इसको संभालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से आप उसको संभाल सकते हैं. जैसे कॉटन में आप उसको रख के उसके साथ कुछ ऐसे जो इंसेक्ट वगैरह ना आए पुराने पीसीस में, तो उनको किस तरह से संभालना है वो चीज को, जो पुराने टेक्सटाइल पीसीस है, वो सारी चीज हम यहाँ पर भी सिखाते हैं. और इसके अलग अलग हम कुछ वर्कशॉप और कुछ लाइव वीडियोस के थ्रू भी हम बताते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन आया है नीलेश जी, I'll ask this question to you. How do these artisans pass on their marketing of crafts? This is from Himangi Apte. She says marketing of crafts is a daunting challenge, बहुत challenging है. ये कैसे आप आर्टिजन्स को ट्रेन करते हैं कि वो मार्केट कर सके अपने आप को, अपने क्राफ्ट को, और क्या हैंड होल्डिंग कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो जो आर्टिसन के साथ हम काम करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि पुराना हमारा एंशिएंट इंडिया का मार्केट कैसा था. तो एंशिएंट इंडिया का मार्केट था फेस टू फेस मार्केट कल्चर, जहां पर गांवों में आर्टिसन, सप्लायर और कंज्यूमर तीनों एक ही लोकेलिटी में रहते थे, तीनों एक दूसरे को जानते थे, तीनों एक दूसरे के क्राफ्ट को और अपने बिजनेस को वैल्यू करते थे. वो धीरे धीरे खत्म हो गया और फेसलेस मार्केट कल्चर तैयार हुआ. अगर आज भी हम गाँव में जाते हैं तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं हमें मिलेगी कि मुझे
राम जी भाई के खेत का सब्जी चाहिए क्या, मुझे गंगा बहन के घर का दूध चाहिए, या मुझे श्याम जी भाई ने बुना हुआ कंबल चाहिए। तो वहां पर वो जो फेस टू फेस कन्वर्जेशन था, रिस्पेक्ट था, वो चला गया है। तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि वो मार्केट सिस्टम को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो अगर आर्टिसन के नाम के ब्रांड बनेंगे और आर्टिसन और कंज्यूमर दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो हमने सबसे पहला ये करा कि आर्टिसन को एंटरप्रेन्योर तैयार करें, उनके नाम की ब्रांड बनानी है, उनके ओनर खुद आर्टिसन होंगे और उनको हम कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो मीडिएटर वाला रोल था, उसकी जगह हम फैसिलिटेटर के रोल में आए हैं और आर्टिसन और कंज्यूमर को एक दूसरे से कनेक्ट करा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो आर्टिसन को ग्राउंड लेवल पर जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, इधर वो ऑर्डर से मिलेगा, एग्जीबिशन करेगा या ऑनलाइन करेगा, तो जो लर्निंग मिल रहा है उससे वो धीरे धीरे सीख रहा है और अपने आप में भी वो चेंजेस करता आ रहा है। और कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली हमने एक रिसर्च करवाया था जिसमें कंज्यूमर से पूछा था कि कंज्यूमर मार्केट में क्या बदलाव आया है, कोविड के बाद स्पेशली क्या बदलाव आया है। तो बहुत सारे कंज्यूमर ने ये रिस्पॉन्ड किया कि वी वांट टू डायरेक्टली बाय फ्रॉम द आर्टिसन। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियलिटी है आर्टिसन के लिए। अगर आर्टिसन अपने खुद के प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं और कंज्यूमर के साथ उनका अगर कनेक्शन नेटवर्क बन जाता है, तो आई थिंक ये फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है आर्टिसन के लिए भी, और धीरे धीरे वो अपने मार्केट डेवलप कर सकते हैं। And a platform on e-commerce allows this, doesn't it, Archana? And this is the entire ethos on which People Tree is based, where you're saying that you can buy directly from the artisans, right? Absolutely. We say you can buy directly from the artisans. If any products on our website inspire you, you can get things customized. And that's how you innovate with the artisan. We take you through the whole process. And the idea is eventually to stop hand holding them and set them up like the way a Karigar clinic would do. But with our level of training and with this interaction happening constantly, and it has to move to this setup where artisans can go online and people can directly see what they buy. And at People Tree we go to every extent to ensure that our artisans are linked directly with our customers. मिनी जी, मैं एक बात और ऐड करूंगा कि ये जो मार्केट में जो शिफ्ट आया है, तो आर्टिसन के मन में हमेशा ये रहता है कि क्राफ्ट, तो एक डेफिनेशन बन गया है कि क्राफ्ट इज फॉर द लग्जरी पीपल, या क्राफ्ट तो विदेश में ही बेचना है, वो एक परसेप्शन बन गया था। पर कोविड के बाद जो मार्केट में बदलाव आया है, तो कारीगरों में भी काफी बदलाव आया है कि अब ओवरसीज मार्केट नहीं मिल रहा है, तो हम डोमेस्टिक मार्केट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा कि कोविड से हमें भी एक अच्छा लर्निंग मिला है। ड्यूरिंग द कोविड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द लोकल गिफ्ट बॉक्स, और हमारा ये सोच था कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज तक ये गिफ्ट को कैसे पहुंचाए। और बहुत सरप्राइजिंगली हमें ये लोकल गिफ्ट बॉक्स के ऑर्डर्स ओवरसीज से मिले, भारत के मेट्रो सिटीज से मिले, छोटे शहरों से मिले, बट सरप्राइजिंगली हमें ऑर्डर्स गिर फॉरेस्ट के इंटीरियर विलेज से भी मिले, जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं था, कुरियर नहीं पहुंच रहा था। मैंने स्पेशली वो बंदे से, गिर फॉरेस्ट के बंदे से मैंने बात किया कि आपने क्यों ऑर्डर किया है, तो उसका मुझे सामने काउंटर क्वेश्चन था कि हम ऑर्डर नहीं कर सकते। तो अभी तक हम ये मीथ बना के बैठे थे कि क्राफ्ट इज फॉर द लग्जरी पीपल, वो हमारा मीथ था। अब ये सारा जो मार्केट में शिफ्ट आया है, तो ये हमारे मिथ को हमें चेंज करना पड़ेगा कि क्राफ्ट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ क्लासेस। Bilkul. I think that's a fantastic point that you've raised, because it's really about appreciating your own art. And as you said, actually हमारे इंडिया में इतना disposable income आ गया है that it's actually also something that we should be marketing to Indians. There is a question that I want to ask you, Puneet, which is a question that we have also faced when we have traveled, because at Live History India, we've done over 150 films on different art forms in the deep corners of India. Now, the big problem is the next generation of artisans are not very keen to follow up on their parents' professions or legacies, because there isn't enough monetary, it's not remunerative enough, right? There are much more other attractive jobs. So we've seen it in Kanchipuram, we've seen it across. Now,
with the intervention that you have done, have you been able to stop this disappearance of art in the next generation by inducing the next generation to actually take up their legacies? Yes, to some extent, we were able to make this possible, and the reason behind was like embroidery की अगर हम बात करें तो it was never set with the right benchmarks for the remunerations, right, since inception. So what Kasab has played the role is to set the benchmarks and take it to the different level every time. So here we have tried the next generation is coming up with this situation. If I am getting the similar thing, a similar other job where I get the easy income, why should I come here? So that is why we always try to be a coordination team where we always try to take this on a different level, benchmarking the different standards for the artisans also, for the market also. And in some of the communities in Kutch, due to this, it's an interesting story. Like in Debaria Rababis, they have banned the embroidery within the system because it was delaying so many other rituals of the community. So they have strictly banned it. So the next generation, as of now, the artisans who are practicing this beautiful skill are above the age of 40. So now we are going back to them, to the young generation, saying that if not for the your own purpose, but to use the skill to earn out of it a dignified income out of it. So yes, the main role here would be like the channels like the People Tree or like the organizations like all of us to set up the benchmarks where this will be considered an educated market needs to be educated every time that why this is costing this much and what are the reasons behind it. So that effort needs to be done. And you are right, the young generation is taking the back step when it comes to the comparison of the income here. So that is our role, and People Tree is also doing a well step. Like it's trying to set a new benchmark in the retail market also, where it will be rightly valued. Minnie, I'd just like to add something to that. I wouldn't mention the customer or the country, but we had sent a product to one of our customers overseas. And of course, they had read about the craft form, and all our craft forms are genuinely done by artisans. And we take them through the whole process. And when they received the product, they were overwhelmed with how gorgeous it was. But their question was, why does it cost less than a packet of bread in our country? If this is taken 20 days to make by someone, why does it cost only this much? And that's when we realize that there's a huge gap between what artisans really deserve and what we think they deserve. You know, someone's got to bridge that gap. So that's what we are trying to do at People Tree. That benchmarking is required, where this will be rightly priced. Yes. Yeah, and the other times, many times, generation is also so keen that they want to do it, but somehow they are not finding the right opportunity for that. So creating those opportunity through such channels and mediums is also very important. Yeah. मुकेश, if I can get you in here, pandemic में आपका क्या experience रहा? एक question आया है हमारे viewer से कि आपने ये pandemic के साथ कैसे deal किया हुआ? पहले जो अभी लास्ट डिस्कशन हो रहा था उसमें हमारा भी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कला रक्षा में भी काफी विजिटर्स आते हैं बाहर से, इंडिया से। लोग आकर देखते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी पीसीस है, जैसे एक स्टोल एसेसरीज हो गया। अभी स्टोल का प्राइस है 15,000, तो कस्टमर का पहले रिएक्शन होता है क्या आप लूट रहे हो, स्टोल का प्राइस 15,000। तो तब उसे पता नहीं होता है कि इसके पीछे क्या है। तब हम उन आर्टिजन को ले जाते हैं डायरेक्ट आर्टिजन के पास, जहां पर वो खुद काम कर रहे हो उस पीसी पे, उस एम्ब्रॉयडरी पे। तो वो जब देखते हैं एम्ब्रॉयडरी को कि किस तरह से वो मतलब 5 मिनट में 1 इंच की लाइन बनाते हैं, वो स्टॉल में इतना काम करने के लिए इसको कितना टाइम लगा हुआ होगा। तब उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, ये इतना दाम क्यों है। और वो सामने से फिर कहते हैं इनका 15,000 क्यों, इनको तो इतना टाइम लगा, इसका तो 30,000 आप लगाओ। तो और जो आर्टिजन्स वो चीज जब कोई आता है बाहर से, उसको देखता है, उसकी मतलब तारीफ करता है,
उसको रिकॉग्नाइज देता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो आप कर रहे हो। उनके बच्चे जब देखते हैं और तब उन्हें भी एहसास होता है कि नहीं, मेरी मम्मी को देखने के लिए बाहर से आए हैं, उनको वो लोग शाबाशी दे रहे हैं, तो उनकी भी एक खुद में इच्छा जगती है कि नहीं, मैं भी इसी चीज को आगे ले जाऊंगी और मतलब खुद की भी एक आइडेंटिटी बनाऊंगी। तो ये जरूरी है कि जब तक आप आर्टिजन को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा तब तक आर्टिजन की नई जनरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब ज्यादा तो ज्यादा उनकी आइडेंटिटी उनको जरूरी है। तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ कच्छ में काफी इम्पोर्टेंट है कि हर एक आर्टिजन को आप देखोगे कहा कि मेरी आइडेंटिटी है, मैं कुछ काम रही हूँ उसको मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो हमारा भी यही रहा है कि हम जब भी एग्जीबिशन करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम आर्टिजन को उसके साथ में ले जाते हैं। तो आर्टिजन भी कनेक्ट होते हैं मार्केट के साथ और मार्केट भी देखता है कि कौन कर रहा है, कैसा आर्टिजन है। तो ये जरूरी है, आर्टिजन को हर एक स्पेस में आप उनके साथ रखिए, उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए। तो यही चीज मेरा भी है। और हाँ बताइए मुकेश जी। हाँ आप बताइए। नीलेश जी, यू नो वन क्वेश्चन हैज कम कि जैसे आपने बोला कि पाबी बैन के बैग्स जो हैं आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, देयर लॉट ऑफ वुमेन वर्किंग ऑन इट, हाउ डू यू मैनेज टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट, the quality of it? Because the moment you start having a lot of demand, you're also often compromising to meet the demand. So what are the checks and balances that you use? सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी आर्टिसन एंटरप्रेन्योर हम तैयार करते हैं उनको शुरुआत से ही एक चीज क्लियर होती है कि उनको बहुत बड़ा नहीं बनना है बट बहुत अच्छा बनना है। तो उनको स्मॉल रह के अच्छी चीजें कैसे बनानी है, तो हम बहुत बल्क में ऑर्डर्स नहीं लेते हैं, बट हाँ डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी रहती है 50 या 100 या 200, तो मैक्सिमम हमारी 500 तक की क्वांटिटी हम एक्सेप्ट करते हैं। और विद इन मॉडल हमने ये सिस्टम तैयार किया है कि सबसे पहले आर्टिसन लेवल पर उसकी क्वालिटी चेक होती है, उसके बाद जब वो स्टिचिंग के लिए जाता है तब उसकी क्वालिटी चेक होती है, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होता है तब उसकी क्वालिटी चेक होती है, और फाइनली जब कोई ऑर्डर के लिए डिस्पैच होता है तब उसकी क्वालिटी चेक होती है। तो आई थिंक 4 अलग अलग स्टेज पर क्वालिटी चेक होती है। तो हमें आज तक कोई भी रिजेक्शन नहीं आया है। तो आई थिंक आर्टिसन अगर ये पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा लर्निंग रहता है। और कारीगर को हम एक सिंपली ये चीज सिखाते हैं कि आप जब भी क्वालिटी चेक करते हो तो आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि अगर मुझे खुद लेना है तो मैं ये चीज बाय कर सकती हूँ इतने रुपये में। अगर आपका जवाब ना है तो आप वो चीज कस्टमर को मत बेचिए। और अगर आप बहुत अच्छी चीजें बनाओगे, कस्टमर खुश होगा, तो आई थिंक आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर विल टेल टू अनदर 10 पीपल, तो आपका वो मार्केटिंग भी हो सकता है। तो आई थिंक कारीगर लेवल पर क्वालिटी अच्छे से हो सकती है। पर क्राफ्ट सेक्टर में ये जनरल प्रॉब्लम देखा गया है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो जैसे जैसे चीजें बहुत बड़ी होती हैं वैसे वैसे इसकी क्वालिटी भी कम होती हैं। तो चीजों को छोटा रखो और चीजों को अच्छा बनाओ, वो इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। Right, but you also have to make sure कि अब अगर आप स्केल भी कर रहे हो तो क्वालिटी का फोकस कंटिन्यू रखें। You know, this is a very important question come from Himangi Apte, Archana. She says, you know, and I'm going to paraphrase the question because we often talk about hand-holding artisans, educating artisans, getting them to revive it. But her question is, isn't customer education is a must for better value realization? And I think that's a very valid point, because we as Indians need to be proud of this and willing to pay money to help revive our arts. And I think that's a very important point that Himangi has made. Absolutely. So that's exactly what we're doing at People Tree. We are trying to revolutionize the current scenario of the way people think of our crafts, and that can be done only through educating our customers. Simple things like when people order stuff and they want to know when it will be shipped to them. Sometimes if we tell them 15 days, they don't understand why it will take 15 days for a product to reach them. So you have to educate them and tell them what the process is. And these are not people
who sit in a factory and work from morning to night relentlessly. These are homemakers, these are mothers, these are grandmothers, these are, women who have a parallel life, a full life happening alongside, and this is their passion. And also coming back to what Nilesh Bhai was saying earlier, the quality of the products is usually, if your artisan is a skilled artisan, is usually good because they put in their heart and soul into every product. Unless it's a new artisan who's unskilled, even then they still put their heart and soul into a product, so that's why your rejection chances are less. They always put their best foot forward despite the deplorable conditions they work in. And when I say deplorable, I mean Kutch is a place with such harsh contrasts, the heat, all those conditions under which they work. The products that you see are still so beautiful. Right. Parul Yadav has a very important question, and I'm going to ask that to you, Archana, before I ask concluding comments from everybody on the lessons learned from their own journey so that they can consolidate their thoughts. But Parul has a very valid question, which everybody who's ever been passionate about arts has. She asked, there is a general perception that the amount charged for the product does not reach the artisans, but is eaten away by the middlemen. Can we have a little on this? This deters a lot of middle-class people from actually buying these products. Yes, that is happening a lot. It happens actually all the time because artisans usually come from economically challenged sections of society. They aren't aware of the actual price they should get for the product, which is where the middlemen and the final retailers actually swoop in and make a killing. And that's why we at People Tree have recognized this. We have a very, very foolproof formula where we give a percentage of the MRP that we sell on. And that's one way of ensuring that and that also includes the price correction. Like I said, if something costs less than a packet of bread and has taken somebody 1 month of labor, it's just not justified. So we do these two things together. And then it just boils down to building trust in customers. As you go through our products and experience our products and see the quality of the products, you'll realize the integrity with which we do what we do. And it's then for you to decide, how a brand works. Be responsible, see what they're doing, understand what each of them is doing, and be aware whether these are brands that are actually pretending or actually doing the hard work here. And just to answer Parul's question, all the three players in this panel, apart from the e-commerce, that's People Tree, be it a Kasa, be it a Kala Raksha or Karigar clinic, are focused on making sure that the artisan gets the most value out of the sale. And that is, I think, one of the reasons why the Kutch Collective has been so successful, because they have really empowered the artisan themselves. They're directly dealing with artisans and selling and acting as the marketing arm, the promotion arm, the archiving arm of these arts. But there are many other things that we haven't got enough time for, but I'm going to quickly wrap up. There are many things that are very unique about the Kutch experience. One is the collaborative effort. Now, the Kutch Collective is actually a coming together of 4 institutions, 4 organizations, Kasa, Khmer, Srujan, and Kala Raksha. They collaborate, working on a whole cross-section of art forms, and yet they don't step over each other. So I think that's also a very wonderful lesson to learn, Puneet. We are out of time, but I want you to comment on this and also tell us, what are the 2-3 takeaways that you feel you have got from your experience working in Kutch for the last 18 odd years that can be replicated in the rest of India? And I'm going to ask Mukesh and Nilesh Bhai the same questions. Let me start off with you. Yes, this can be replicated if model like this can be developed where the sense of ownership is given to the artisan also, that you also are part and parcel of this whole system or the whole business. Till the time that ownership is not coming into the overall model, that the lifeless it is and it is monotonous. So what as an organizations, we all 5 organizations are trying to do is that bring out that ownership of that. Then the quality will also be taken care. Then the market will also automatically be taken care. Then they will work as if it is their own business, own system, and they need to upgrade themselves. They need to
build their qualities. Everything will be taken care when the sense of ownership will come into this, and that is what, as a organizations, we are trying to bring into that, that how best you can perform in the market, and there is no point going in a diverse fields, come together and deal with the market as a collective will always give you a strength to deal with the market, with the mass market. Individually you may be able to thrown out by the market will negotiate with you, but when you are in a collective, market will come to you rather than you come to the market. Right. So that is the Mukesh, fabulous. हाँ, Mukesh. मतलब जैसे केसीसी का मतलब जो कच्छ क्राफ्ट कलेक्टिव जो 5 ऑर्गेनाइजेशन का साथ बना हुआ है, इसका मोटिव यही रहा है कि हम जो 5 ऑर्गेनाइजेशन में इनमें कैपेसिटी काफी है, इनका सभी का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कुछ वीक पॉइंट्स है। तो अगर 5 ऑर्गेनाइजेशन साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है या वीकनेस है उनको समझेंगे, और जो उससे 5 ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा जो बल लगेगा उसके साथ हम मार्केट में जाएंगे। क्योंकि सभी का जैसे कला रक्षा है वो इंटरनेशनल मार्केट अच्छा है, उसका सृजन है, कसब है, खमीर है, वीआरडी है, इनका लोकल नेशनल मार्केट अच्छा है और इंटरनेशनल भी अच्छा है। तो अगर दोनों को मिलाया जाए तो दोनों को बेनिफिट हो सकता है, सभी 5 ऑर्गेनाइजेशन को इससे बेनिफिट हो सकता है, एक बड़ा मार्केट मिल सकता है सभी को, और जो भी मतलब नीड हो सभी की वो एक जगह से मिल पाएगा। मतलब कच्छ का जो भी क्राफ्ट है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को केसीसी के थ्रू मिल पाएगा। उसको 5 ऑर्गेनाइजेशन को जाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ केसीसी पे आएगा, उसको 5 ऑर्गेनाइजेशन की एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाएगी। तो ये केसीसी का मेन राइट। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी। नीलेश जी, इफ आई कैन गेट यू इन हियर, मेरा ये क्वेश्चन है, पाबी बहन की जैसे आपने कितने नए एंटरप्रेन्योर्स बनवाए हैं, और व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दैट, व्हाट इज इट दैट यू कैन टेल अदर्स हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, हु वांट टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स? सबसे पहला तो पाबी बहन जो मॉडल डेवलप किया उससे हमें जो लर्निंग मिला, सबसे बड़ा लर्निंग ये मिला था कि जब पाबी बहन का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया और मार्केट में जब उनके प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए, तो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तरफ से सबसे पहला अपोज किया गया कि एक आर्टिसन के जो ब्रांड है, आप अगर हम हमारे साथ बिजनेस करना चाहते तो अपना लेबल हटा दीजिए, अगर आप बिना लेबल के चीजें देंगे तो हम आपसे खरीदेंगे। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ कि बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला था, हमने पूरा प्रोडक्शन कर लिया, और जब वो ब्रांड को हमने ये सप्लाई किया, उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने डिमांड रखा कि आप अपना लेबल हटा दीजिए तो हम आपसे ये चीजें लेंगे। हमने पूरा ऑर्डर वापस मंगवा लिया और पैसे भी उनको रिटर्न कर दिए, बट हम हमारी जो बात थी आर्टिसन आइडेंटिटी वाली, आर्टिसन ब्रांड, उसके ऊपर अड़े रहे। धीरे धीरे मार्केट ने वो एक्सेप्ट किया। हमने लोगों को और कस्टमर को ये समझाया कि भाई आर्टिसन एक वीकनेस नहीं है, आर्टिसन कुड बी योर स्ट्रेंथ। वो कैसे उसको स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है उसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। और धीरे धीरे हमने ऐसे रिटेलर के साथ बात किया जो कोलैबोरेटिव वे में, मतलब कि आर्टिसन को आइडेंटिटी दे, उनकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाए। तो हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर उनको हमारे वैल्यूड पार्टनर की तरफ से जोड़ा हमारे साथ, तो उनको भी एक आइडेंटिटी मिली, हमारे आर्टिसन को भी आइडेंटिटी मिली। तो एक अच्छा सॉल्यूशन इस चीज का निकला। तो आई थिंक हम ये विजन पर अभी जो चल रहे हैं कि भाई पाबी बहन का जो मॉडल है वहां पर बहुत सारे स्ट्रगल्स हमें फेस किए, बहुत सारा लर्निंग मिला। तो एक छोटे एंटरप्रेन्योर कारीगर को एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ेगी। तो ये सबको ये प्रॉब्लम फेस ना हो, इसलिए हमने कारीगर क्लिनिक स्टार्ट किया, जहां पर हम सिंपल ये करते हैं कि हमारा हेल्थ खराब होता है और हम क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। तो सेम तरीके से हम कारीगर का बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं वो फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करते हैं। तो एक छोटे एंटरप्रेन्योर को बिजनेस चलाने के लिए जो इकोसिस्टम की जरूरत होती है वो हम तैयार करते हैं। तो हम ये अभी विजन पर चल रहे हैं कि पाबी बहन का एक मॉडल सक्सेसफुल है, अभी हम राजीव बहन के साथ काम कर रहे हैं, जब्बार एंड मुबीन खत्री के साथ काम कर रहे हैं, मातानी पछड़ी में ज्योत्सना बहन के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह से हम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ के उनको डेवलप करना है
और मेरे हिसाब से कंट्री लाइक इंडिया, वी डोंट नीड $1 billion कंपनी, बट वी नीड 1 million आर्टिसन एंटरप्रेन्योर्स। जो सही में अगर ये चीज पॉसिबल होता है तो गांवों का जो रूरल इंडिया का है वो शक्ल चेंज हो सकता है। तो हम ये विजन पर काम कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में हम ग्रामीण भारत में 1000 रूरल एंटरप्रेन्योर तैयार करना चाहते हैं और उनको इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि कम से कम एक एंटरप्रेन्योर 100 लोगों को रोजगार दे। तो अल्टीमेटली वी आर टारगेटिंग फॉर a 1 lakh livelihood in the rural India. Fantastic. That's such a lovely thing to hear, because that is exactly what we need in India. And each one of you is doing such a fantastic job, because in Kasab, we didn't even talk about the emancipation journey that you are taking a lot of these artisans on. It's really about finding their voice, finding their purpose, as well as finding a remunerative employment. Kala Raksha is doing fabulous work in archiving and documenting these pieces and really making sure that these arts revive. And People Tree is doing a great job bringing it all together, and not just in Kutch, but in every region of India, giving a voice to the artisan. You know, normally in Heritage Matters, we spend a whole section talking about challenges. This time, I'm very happy we've not spoken about challenges, because I think the spirit of finding the answers has overtaken any conversation on challenges. So it's really wonderful to have all of you here. Hope to have many more discussions and come to Kutch and really shoot with you, shoot some of these artisanal stories. I really look forward to that. Many thanks for joining us today. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Goodbye. Goodbye.